I hope the previous one is recorded. Okay, so I'll continue again from here. So right, so so what I was saying here is कि यहाँ पे sentence में आप एक variable use कर रहे हैं जो कि x है, और अगले sentence में भी variable x है, उससे अगले sentence में भी variable x है. तो ideally आपको करना ये चाहिए कि हर sentence के अंदर एक नया variable introduce करवाना चाहिए. तो इस sentence के अंदर instead of saying x, I can say that this is, let's say, x1 and this is x1 and this is x1. ठीक है. और अगले सेंटेंस के अंदर आई विल यूज अ डिफरेंट वेरिएबल जो कि x2 है, और फिर उससे अगले सेंटेंस के अंदर x3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो सो दिस इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी. ठीक है. सो यू कैन आल्सो डू दिस. अगर आप इसको ऐसा नहीं भी करते, इवन देन योर आंसर वोंट बी डिफरेंट, लेकिन इट्स गुड टू हैव this distinction कि हर सेंटेंस में जो वेरिएबल है, although that variable is representing the same object, फिर भी आप उसका जो वेरिएबल का जो सिंबल है या जो लेबल है उस वेरिएबल का, वो आप डिफरेंट यूज करें. फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 के अंदर मैंने उसको x1 कह दिया, सेंटेंस नंबर 2 के अंदर मैं उसको x2 कह सकता हूँ. ठीक है. सेंटेंस नंबर 2 क्या था? सेंटेंस नंबर 2, if you remember, this was के study x or x is lucky implies that x passes the subject y, and this stands for all x and for all y. So यहाँ पे x subject यानी student को ही represent कर रहा है, लेकिन conjunctive normal form के अंदर मैं अब इसको x2 कहूँगा और पहले वाले में मैं इसको x1 कह दूँगा. ठीक है. तो इसका जो conjunctive normal form मेरे पास बनेगी, वो conjunctive normal form कुछ इस तरह से बनेगी कि I'll actually write it down in this way, saying that, so I'll have to negate the first bit, so not study x. So instead of saying x, पहले मैंने x1 कहा था, अब मैं इसको x2 कह दूँ. ठीक है. x2 और lucky x2, and then you have or pass x2 comma y1. So y1 is the new variable. So मैंने इसको y1 का नाम दे दिया. So this is the conjunctive, this is the normal form. और इसमें मैं अब negation को, if I'll pass it through the bracket, तो you will see कि इसमें क्या change आ सकती है, how this will get changed, right? So इसको आप you can actually see this, right? Right. So I hope this clarifies कि मुझे हर sentence के लिए variable symbol जो मैंने use करना है, वो मैंने different variable symbol use करना है. So this is what this sentence would look like. ठीक है. Similarly, I'll have the third sentence. Third sentence is that John did not study, but John is lucky. तो इसमें इस sentence के अंदर it's basically saying कि not study John and lucky John. Okay, so this is the sentence. ठीक है. अब because there is an and connective between these two, I can write these two separately also. I mean इस sentence को, क्योंकि this clause is also true and this clause would also be true in order to make this whole clause true. तो मैं इसको इस form में लिखने के बजाय इनको separate clauses की form में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि every clause which I'll write down in predicate in first order logic would be considered as true. ठीक है. तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसका जो equivalent form है वो ऐसे भी लिखा जा सकती है कि इसको मैं दो separate clauses के form में लिख दूँ. So I can write it down in this way,
and then I can also the second clause as a second clause. So and connective इसमें से मैं remove कर सकता हूँ, ठीक है, इनको separate clauses की form में भी मैं लिख सकता हूँ. So this is also fine. So when I write down all the clauses जो कि मैंने जितने भी sentences लिखे हैं वो तमाम के sentences या तमाम के clauses जब मैं लिख रहा हूँ तो इनको मैं and connective के साथ भी लिख सकता हूँ और and connective को remove करके भी लिख सकता हूँ. तो it's one and the same thing. ठीक है. So that means if I just reiterate this, if it is A and B, so I can write it down as A, B because both of these clauses are to be true. If it is like A, B and C, तो फिर मैं A, B, C को अलग अलग भी लिख सकता हूँ अपने clause set के अंदर. और refutation tree के अंदर जब मैं इन्हें use कर रहा हूँ तो I can use this separately and I can use this separately because both of them will be true. इसका भी मतलब है कि ये दोनों true होंगे और इसका भी मतलब ये है कि इस सेंटेंस के ट्रू होने के लिए इन दोनों का ट्रू होना जरूरी है. तो आई कैन राइट डाउन these as separate or I can write down as one. So I'll say that okay, this is sentence number 3 and this is 3A of the sentence and this is 3B of the sentence. ठीक है. So this is representing the same sentence लेकिन it consists of two separate clauses and when I write them in this form this would automatically mean that there is an and connective between them. ठीक है. 3A सेंटेंस ये हो जाएगा और 3B और इन दोनों को मिला के 3 सेंटेंस इस तरीके से. आई होप दिस इज आल्सो क्लियर. And then we have another sentence which says that anyone who is lucky wins the lottery. इसके लिए which is the fourth sentence I can actually write down in this form. I can say that not lucky X. And now because इसमें sentence number 2 के अंदर मैंने X हाँ sentence number 2 को मैंने complete नहीं किया. So sentence number 2 को भी complete करना चाहिए था. I mean उसको आप इसको अगर आप sentence number 2 को अगर आप खोल लें I mean negation उसकी ये जो sentence number 2 अगर आप इसकी negation को खोल लें ठीक है तो negation को अगर आप इसके अंदर distributive law के तहत ले जाएं तो this will become not study X2 and this becomes and then you have not lucky X2 and this becomes or pass X2 comma Y1. ठीक है. So this is what we have here. Okay, and this is like one bit here and so this is before the implication sign. So I put it in bracket and this is after the implication sign. और यहाँ पे I think you can also I mean यहाँ पे एक और आप काम कर सकते हैं कि because there is an or connective here and there is an and connective here so I can further I mean this is sentence number 2 इसकी जो complete derivation है अब मैं कर रहा हूँ sentence number 3 को ज़हन में रखते हुए you can also break it into two separate sentences क्योंकि यहाँ पे और connective है ना यहाँ पे तो I can say that not study X2 और pass X2, Y1. एक ये सेंटेंस हो जाएगा और दूसरा सेंटेंस इसका जो है वो not lucky X2 और pass X2, Y1. So this also breaks into two sub clauses. ठीक है. So ये और सेंटेंस और जो और के साथ जो पार्ट आ रहा है वो स्टडी के साथ भी आ सकता है और ये पास जो है ये लकी के साथ भी आ सकता है. तो नॉट स्टडी और पास not lucky or pass. So this could be broken down into again two clauses. So यहाँ से भी sentence number 2 जो है that could be broken into 2A and 2B. ठीक है. 2A and 2B की जो form बनेगी वो I mean we'll come to sentence number 4 in a while. 2A जो होगा and this is 2A की जो फॉर्म होगी वो कुछ यूं बनेगी स्टडी X2 और पास X2 Y1 और 2B जो होगा वो नॉट लकी X2 और पास X2 Y1.
ठीक है, तो ये सेंटेंस नंबर 2 की 2 फॉर्म्स बनेंगी। उस एक सेंटेंस को हमने इन 2 क्लॉजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। एंड नाउ यू कैन सी कि अब क्योंकि इसमें सिर्फ और कनेक्टिव है दरमियान में, तो इसलिए दिस इज अ मोर रीजनेबल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, so now we can move on to sentence number 4. sentence number 4 को अगर हम करते हैं तो sentence number 4 को, I hope this is clear, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उसको क्लॉजेज में डिवाइड करना है। जितनी भी क्लॉजेज हैं जो एंड के साथ कनेक्टेड हैं, आप उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस की फॉर्म। सेंटेंस नंबर 4 जो आपके पास आएगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है कि नॉट लकी, एंड अगेन आई हैव टू यूज अ डिफरेंट वेरिएबल हियर x, इसमें भी x आ रहा है तो आई कैन से दैट दिस इज x3, नॉट लकी x3 और wins x3 lot. Okay, so this is sentence number 4 that I've got. ठीक है, so sentence number 4 मेरे पास आ गया। एंड सेंटेंस नंबर 5 की निगेशन वो वैसी आएगी, नॉट हैप्पी John. Okay, so this is sentence number 5 that I've got. So all these have been converted into conjunctive normal form, और इनकी फाइनल जो रेफ्यूटेशन ट्री है वो फाइनल रेफ्यूटेशन ट्री कैन एक्चुअली बी जनरेटेड। आप उसकी फाइनल रेफ्यूटेशन ट्री जो है वो जनरेट कर सकते हैं वंस यू हैव गॉट ऑल दीज सेंटेंसेस विद यू। ठीक है, सो I'll just try to see if I can, yeah, just wait a minute, मैं इसकी फाइनल कंजंक्टिव फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। उसकी जो रेफ्यूटेशन ट्री वाला जो पार्ट है, I'll just show you that. Just bear with me. Okay, right. I'll just go to the relevant folder. जी, यहाँ पे है। So this is the handout जो कि जिसकी एग्जाम्पल को मैं फॉलो कर रहा हूँ, and I'll just share this with you. जी, I hope you can see this. जी, so this is the final refutation tree that is drawn here. ठीक है, and at the end you can see कि आपके पास एक false part आ जाता है। ठीक है, so that means कि everything cancels out at the end. So if everything cancels out at the end and you are left with an empty say set जो कि यहाँ पे false से represent हो रहा है, that would mean कि वो जो आपने negation add की है that has generated a contradiction, and because that negation has generated a contradiction, therefore adding the negation wasn't the right thing to do or wasn't correct. So अगर negation दुरुस्त नहीं थी तो उसका opposite दुरुस्त होगा. So that means that the original hypothesis or the original conclusion that was drawn, that conclusion was correct. So यहाँ पे हमने add किया था कि John is not happy. So that has created a contradiction क्योंकि यहाँ पे आपके पास false आ गया. So that means that John was indeed happy. ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं. Right, so let me just see if there is a question here. I mean you can, अच्छा इब्राहिम का ये है कि आप ये करेंगे या मुझे करें, you can send it to me. ठीक है,
आप अपना जो है वो मुझे आप भेज दें और आप इसको सीसी कर दें रोहान को, ठीक है। सो दैट वुड बी रोहान असगर, उसको आप सीसी कर दें, और या और दाइस को, दाइस और रोहान, दाइस खालिद और रोहान दोनों को सीसी कर दें। अच्छा, महम का क्वेश्चन है, डोंट वी नीड टू हैव अ क्लॉज दैट वी आर ट्राइंग टू प्रूव फॉर रेफुटेशन ट्री इन ऑर्डर टू ड्रॉ कॉन्ट्रडिक्शन? जी जी बिल्कुल, वो आई हैव ऑलरेडी, आई मीन इफ यू लुक एट द क्लॉज नंबर, जी द क्लॉज नंबर जो आपके पास, जिसकी निगेशन आपने ऐड किया है, यस ऑफ कोर्स वो क्लॉज भी आपके पास आएगी। तो जिसकी निगेशन आपने ऐड किया है वो क्लॉज भी आप इसमें ऐड करें, ठीक है जी। इनफैक्ट उसकी आपने जिसकी निगेशन आपने ऐड की है, so that has to be there. So what you are saying is कि if you are going to prove कि John is happy, तो उसके साथ साथ John is not happy की भी क्लॉज आपके पास है, राइट? दोनों आएंगे, ठीक है। अच्छा, 2A and 2B, you can introduce them separately in your say refutation tree also. जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमने यहाँ पे ये किया था कि हाँ, नॉट स्टडी जॉन और लकी जॉन, ये सेंटेंस नंबर 3 को हमने जो था वो हमने दो उसमें कन्वर्ट किए थे, ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे यू हैव एक्चुअली नॉट लकी वाला जो पार्ट है, कुछ क्लॉजेज, अच्छा इसमें ऐसा भी है कि देर देर कुड बी सम क्लॉजेज जो कि शायद आप यूज ना कर रहे हो, ठीक है, रेपुटेशन ट्री के अंदर देर माइट बी सम क्लॉजेज जो कि इसमें यूज ना हो रही हो। जैसे आप अगर इस रेपुटेशन ट्री को, इफ यू ट्राई टू draw this refutation tree, you will find out कि there might be some clauses जो कि आप यूज ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। So that is also I mean on cards, so you have to basically consider this also, कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम रेफ्यूटेशन जो क्लॉजेज हैं वो आप यूज़ कर रहे हो। जो ब्रेकअप मैंने कहा है कि आप उसको 2A और 2B में आप उसको ब्रेकअप कर सकते हैं, that breakup, as I told you, is not really necessary. I mean that's not absolutely required, ठीक है। लेकिन आप उसको यू कैन ऐड दैट, और फिर जब आप उसका रेफ्यूटेशन ट्री आप ड्रॉ करेंगे, तो रेफ्यूटेशन ट्री ड्रॉ करते हुए you have to like cancel out few things or few parts here. तो जैसे वो sentence number, if I just look at, let's say sentence number 1, so sentence number 1 is here, okay, this is sentence number 1, right? So this sentence number 1 में आ रहा है हैप्पी एक्स, ठीक है, और आपने क्लॉज ऐड की हुई है कि नॉट हैप्पी जॉन, तो आप इसको उसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं बाय सेइंग कि x जो है दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ जॉन, जैसे यहाँ पे आपने सबसे पहले स्टेप में किया है। तो दिस इज योर सेंटेंस नंबर 1, ठीक है, सो वी हैव टेकन दैट कंप्लीट सेंटेंस, और इसमें दिस इज द negation that you have added. These two can only combine, or the happy can only be cancelled out if x is replaced by John here, ठीक है। तो वो रिप्लेसमेंट के बाद आप ये कह सकते हैं कि इस क्लॉज को मैं इस क्लॉज के साथ कैंसिल आउट करता हूँ, तो I'll end up having this clause here, ठीक है। और फिर उसको मैं सेंटेंस नंबर 4 के साथ जब मैं उसको कंबाइन करता हूँ, तो यू विल सी के यहाँ पे विन एंड नॉट विन जो है दैट विल कैंसिल आउट, ठीक है, विन एंड नॉट विन विल कैंसिल आउट, एंड एज अ रिजल्ट यू विल हैव a new clause
which is say which will join pass and lucky through an OR connect. ठीक है, तो lucky john was a sub clause that we generated. 3b का एक सब क्लॉज हमने जनरेट किया था, ठीक है, तो अब वो 3b यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट, 3b यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। सो अब आपने जब उसको डिवाइड कर दिया तो यू कैन यूज दैट इंडिविजुअल क्लॉज आल्सो, या आप ओरिजिनल आप वो क्लॉज के साथ भी उसको यूज कर सकते हैं। आई मीन विदाउट स्प्लिटिंग यू कैन ऑल्सो यूज इट, लेकिन विदाउट स्प्लिटिंग जब आप यूज करेंगे तो नॉट स्टडी जॉन भी आना चाहिए ना यहाँ पे, तो नॉट स्टडी जॉन अगर आएगा तो वो इधर किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा एंड दैट विल रिमेन देयर, ठीक है। सो एट सम पॉइंट इन टाइम अगर आप उसको कैंसिल आउट कर देते हैं with another clause that would be fine, ठीक है, लेकिन सिर्फ आसानी के लिए आप उसको सब क्लॉजेस में डिवाइड करते हैं ताकि आसानी से आप उसको कर सकें। तो द रेफ्यूटेशन ट्री डजंट मीन कि हर क्लॉज का हर प्रेडिकेट जो है वो यूज हो रहा हो, ठीक है जी। अच्छा, तो हाँ हाँ ठीक है, आई मीन जो माम का क्वेश्चन है कि क्या इसमें कोई स्पेशल सीक्वेंस है, नो देयर इजंट एनी स्पेशल सीक्वेंस एट ऑल, ठीक है। सो यू कैन कंबाइन दीज क्लॉजेज टुगेदर रेफ्यूटेशन ट्री के अंदर इन व्हाटएवर वे यू वांट, लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि आप पहले एक सेंटेंस उठाते हैं और फिर आप ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी क्लॉज है जो कि उसमें से आप उसकी सब क्लॉज को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लॉज नंबर 1 यहाँ पे इन्होंने उठाई और अब इसमें देखा कि हाँ हैप्पी को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ विद नॉट हैप्पी बाय रिप्लेसिंग दिस, ठीक है। तो वो सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कोई भी क्लॉज उठा सकते हैं, right ji. So we are back, so I hope this clarifies. So now what you can do is you can just send me and उसको सीसी कर दें दाइस खालिद को और रोहान को और मुझे, आई मीन दोज ऑफ यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, आप लोग जो हैं वो मुझे वो भेज दें, ठीक है। सो दैट्स इट। so I guess this clarifies. ये जो handout है, I'll upload this handout if it is not already uploaded, तो then you can like go through this, और इसमें जो डिटेल्स हैं यू कैन हैव अ लुक एट दोज डिटेल्स, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें ये जो एग्जांपल अभी हमने किया है, यू विल हैव टू राइट दिस एग्जांपल, आई मीन सॉल्व दिस एग्जांपल, और उसकी स्कैन कॉपी आपने हमें भेजनी है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है इब्राहिम का कि कैन वी री यूज एन एक्सप्रेशन एज वेल। नो, यू कांट री यूज एन एक्सप्रेशन, आप ऐसा नहीं कर सकते, आई मीन अदरवाइज यू विल एंड अप इन साइकिल्स, सो यू कांट री यूज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको री यूज अगर आप करेंगे तो फिर तो आप हर सूरत जो है वो कैंसिल आउट ही कर देंगे उसको, ठीक है। सो री यूजिंग एन एक्सप्रेशन इज नॉट एन ऑप्शन, राइट। तो ये एग्जाम्पल जो आज हमने की है, यू हैव टू I mean solve this example again yourself with complete derivation, ठीक है। और फिर हम उसको जो है वो I mean and then you send it to me. अच्छा, in the exam, अच्छा आप कह रहे हैं कि can we reuse expressions as well, so, but in example 3b was used twice. कौन सी एग्जाम्पल 3b थी जो कि हमने 2 दफ़ा देखी है? इफ आई जस्ट 1 मिनट, 3b को 2 दफ़ा यूज किया है। अच्छा, now that is something, so there might be something lucky
एक मिनट ज़रा, हाँ इसमें यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि एक तो लकी जॉन आ रहा है और फिर इसके अलावा लकी विद सम वेरिएबल्स भी आ रहे हैं ना, वेरिएबल्स के साथ भी आ रहा है। तो हाँ, अंडर सब्स्टिट्यूशन यू कैन एक्चुअली यूज इट, ठीक है। लेकिन इफ इट इज अ कांस्टेंट तो फिर मेरे ख्याल में आप उसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे पता नहीं उन्होंने फिर क्यों यूज किया है, मे बी देर इज एन इशू हेयर, ठीक है। um, hmm. So this is something which I'll have to look into and see कि क्या आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, बट आई एम नॉट श्योर दो, ठीक है। इससे मुझे कुछ जो है वो कुछ थोड़ी सी वो हो रही है, आई मीन डाउट क्रिएट हो रहा है इन माई माइंड, बट आई विल हैव टू गो थ्रू दिस, क्योंकि इसने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस नहीं बताई, ठीक है। इस रेफ्यूटेशन ट्री के अंदर सब्स्टिट्यूशंस नहीं बताई, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन राइट एट द स्टार्ट उसने बताई है। उसने तमाम एक्सेस को, जितने भी x1 x2 x3 x4 और जितने भी वेरिएबल्स आपने इंट्रोड्यूस करवाए थे, उन तमाम को उसने जॉन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है, कि एज अ रिजल्ट ऑफ सम सब्स्टिट्यूशन वो यूज हो रहा हो, ठीक है। लेकिन आई थिंक यू कैन इवन गेट दिस प्रूफ विदाउट यूजिंग विदाउट यूजिंग a clause again, ठीक है। बट दिस हैज़ टू बी वेरीफाइड फर्स्ट, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और दोबारा यूज़ करना नहीं चाहिए। एनीवेज, ठीक है, I'll just look into this and I'll come back to you, ठीक है, regarding this point, ठीक है, because there might be some confusion here, ठीक है जी। Is there anything else? Okay, so if there isn't anything else, तो आप इसका जो है वो जो है just do as I just told you, try to draw a refutation tree, following all these steps, and then try to use as many clauses as possible. I mean, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको ये आपको मैंने दिखाया है रेफ्यूटेशन ट्री, ज़रूरी नहीं है आप वही रेफ्यूटेशन ट्री जो है वो जनरेट करें। यू कैन ट्राई टू come up with a refutation tree that uses all the clauses, and और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। and then send me that, ठीक है। and try to also see कि क्या आप reuse of clause जो है उससे आप बच सकते हैं या नहीं बच सकते, ठीक है। anyway, अगर reuse of clause है तो फिर है, ठीक है। तो I'll just find it out, work it out, and then come back to you again regarding this point, ठीक है। But as far as I mean, my initial response would be कि don't try to reuse the clauses, ठीक है। and without reusing the clauses just try to find out कि क्या ये ऐसा क्या आप refutation tree बना सकते हैं या नहीं बना सकते। And if you are unable to draw a refutation tree, that means that you are unable to prove what you started with to prove. अच्छा जी, सो अब एक और छोटा क्वेश्चन था कि व्हेन इज अ फाइनल एग्जाम के बारे में वी लेट यू नो इन अ डे और टू कि कब हम रखना चाह रहे हैं, उसका क्या तरीकाकार होगा। प्राइमरली सॉर्ट ऑफ, आई मीन जैसे वो है असाइनमेंट टाइप, आई मीन यू विल गिवन इनफ टाइम टू एक्चुअली कंप्लीट इट, और टाइम बार उसको हम कुछ करेंगे, बट वी हैवंट रियली डिसाइडेड कि कब करना है उसको।
we'll let you know. ठीक है. Okay, we'll see whether coding will be part of it or not. ठीक है, so we'll see. So if you have done enough coding, to then we can also like do away with that part. Okay, so it's getting tiring now. ठीक है. All the finals have the same dates. What do you mean by that? All the finals have the same dates? I mean the same week. Okay, ठीक है. Right. So ठीक है, we'll